Hello बच्चों, in the last class we did find out MR. So we have written that MR is equals to price 1 minus 1 by elasticity. Please keep in mind that here I am taking elasticity as or in modulus sign, which means that according to law of demand we all know that my elasticity of demand is negative, because as price increases my quantity demanded will decrease, and if price decreases my quantity demand will increase. Therefore, because of law of demand my elasticity is negative. But in this case, since I have already introduced this minus sign here, I will take my elasticity here as this, which is in modulus sign. It means that, for example, if my elasticity is equals to minus 2.5, here I need to put only 2.5. Why? Because I have already introduced minus sign here, right? So we did that in last class. Now write down one more important concept. Write down inverse elasticity rule. Inverse elasticity rule. Markup index of monopoly power. Index of monopoly power. Again, this is very important topic. बहुत बार एग्जाम्स में आया. So let's start with this. Now we all know that MR is equals to price 1 minus elasticity. At profit maximization, MR is equals to MC, right? We all know that. And here keep in mind one more thing, that price is more than MR and price which is equals to MC, and hence we can say that price is more than MC. अभी बच्चे यूज करूंगा मैं ये वाला concept, right? So at profit maximization MR is equals to MC, and hence we can write this as MC is equals to price 1 minus 1 by E. MC is equals to price minus price by E. We can write this as price by E is equals to price minus MC. 1 by E is equals to price minus MC by price, right? And this is really very important, because this is nothing but your Lerner index of monopoly power. So write down Lerner index of monopoly power is nothing but equals to L for Lerner index, which is equals to 1 by elasticity, which is equals to 1 minus MC by P. ये तो हमने चीज़ें समझ ली बच्चे फॉर्मूले में, बट इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड दिस? सो वी ऑल नो दैट इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी, राइट? सो अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करता हूँ, इन दिस केस we all know that price is equals to MC, and hence this term is equals to 0, and hence this term is equals to 0, which means that L, which is equals to 1 by E, which is equals to 0, and hence we can write this as 1 by 0 is equals to E, which is nothing but infinite. So here elasticity demand is what? Infinite. क्या यही आंसर हमारा आता था in the case of perfect competition? The answer is yes. If elasticity is infinite, then price is equals to MC. अब Lerner index of monopoly power, वर्ड क्या है बच्चे? मोनोपोली पावर. मोनोपोली पावर क्या बताता है हम लोगों को? मोनोपोली पावर is saying that as a monopoly firm, how much price you can charge higher than MC. How much price you can charge higher than MC. अब एक बात बताओ, in the case of perfect competition, can we charge price higher than MC? The answer is no, because at profit maximization
price is equals to MC. Hence, we can't charge price more than MC, right? But in the case of monopoly, can we charge price more than MC? The answer is yes. And मैं आपको बोल रहा था ना, मैं आप इस रूल की बात करूंगा. अब यहां पे देखो, at profit maximization in the case of monopoly, MR is equals to MC, but we also know that price is more than MR, and hence price is more than MC. So ये तो clear है कि in the case of monopoly, price is more than MC, right? So in the case of monopoly, price is more than MC, unlike this situation in the case of perfect competition where price is equals to MC. Now in this case, the question is कि as a monopoly firm, how much more price you can charge above your MC? For example, if I say MC is equals to 10 and price equals to 11 versus MC is equals to 10 and price equals to maybe 100. So आप कितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाओगे? क्या आप 10 से 11 पे पहुंचोगे? You are charging more 1 rupee, और आप 10 से 100 पे जाओगे? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा मार्केट डिमांड. वो कैसे? इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी. नाउ वी नो दैट हियर इफ यू सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हियर इफ यू सी, दिस पार्ट इज नथिंग बट 1 by elasticity, right? So अगर जितना ज्यादा इलास्टिसिटी होगा उतना कम मोनोपोली पावर होगा. कैसे पता? अभी हमने क्या देखा? इफ इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, प्राइस इक्वल्स टू MC, सो देयर इज नो मोनोपोली पावर. क्योंकि मोनोपोली पावर क्या है? मैं कितना ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता हूं ओवर एंड अबव MC. सो इफ इलास्टिसिटी इज वेरी लार्ज विच इज इनफाइनाइट, I can't charge price more than MC. But अब इलास्टिसिटी को धीरे धीरे कम करते रहो. जब इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होगी, राइट, तो होगा क्या बच्चे? We have 1 by elasticity which is price minus MC by P. If this reduces, this will go up and hence this will go up, right? तो जितना कम इलास्टिसिटी होगा, जितना कम इलास्टिसिटी होगा उतना ज्यादा प्राइस आप चार्ज कर सकते हो मोर देन MC, राइट? जितना कम इलास्टिसिटी होगा उतना ज्यादा आप प्राइस चार्ज कर सकते हो मोर देन MC. नाउ हियर इज अ कैच. आप ये बोल सकते हो कि सर व्हाट इफ वी आर चार्जिंग elasticity, or what if elasticity is equals to 2? In this case I can say that this is 1 by 2. मैंने elasticity, inverse elasticity में लिख दिया इसको, which is price minus MC by P, and if I solve this, this is P by 2 price minus MC, and hence we can write this as, which is MC is equals to P by 2, and here price equals to twice MC, which means that जो भी मेरा प्राइस होगा, वो कितना होगा? वो twice of MC होगा. लेट्स से मैं MC is equals to 10, in that case my price is equals to 20, right? Know that MR is nothing but price 1 minus this, and MR is nothing but price. अगर elasticity 1 है बच्चे, so MR is equals to price, 1 minus 1 is equals to 0, and MR is equals to 0, and hence MR is equals to 0. अब एक और चीज याद करो यहाँ पे. कल ना मैंने आपको डायग्राम बोला था बनाने के लिए. आई होप आपने वो एज अ होमवर्क जरूर ट्राई किया होगा. ये आपका डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व, right? And we all know that here this is a midpoint, this is a midpoint.
So here elasticity is equals to 1, here elasticity is infinite, here elasticity is 0, right? In this case मैंने आपको ये बोला था निकालने के लिए, आपने निकाल लिए होंगे, अगर नहीं आया तो प्लीज डू लेट मी नो। या elasticity is more than 1 and here elasticity demand is less than 1। ये बच्चे क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको लीनियर डिमांड कर्व पे डिफरेंट इलास्टिसिटी निकाल के दिखानी है उनको ग्राफिकली, राइट, और उसको एक्सप्लेन करना है। सो इन दिस केस दिस इज द सिचुएशन एंड वी ऑल्सो नो दैट व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 mr इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो mr, अब मैं यहाँ पे mr का बना रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ से मैं पहले ही इसको डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा mr कर्व यहाँ से पास करना चाहिए, राइट। सो नाउ दिस इज माई mr कर्व, दिस इज माई AR कह लो या फिर डिमांड कर्व कह लो, राइट। इन दिस केस व्हेन इलास्टिसिटी इज 1 my mr is equals to what 0, right, this is my mr। when elasticity is between this region my mr is positive, we can see that। when elasticity is less than 1 my mr is negative, right। अब फ्रॉम दिस डायग्राम मुझे आप एक चीज बताओ, एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वी नो दैट mr इज इक्वल्स टू mc। तो क्या मोनोपोली की इलास्टिसिटी कभी भी लेसर देन 1 होगी? कभी भी लेसर देन 1 होगी? क्या मोनोपोली की इलास्टिसिटी कभी भी इस रीजन में लाई करेगी? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि अगर मोनोपोली की इलास्टिसिटी लेसर देन 1 होगी तो mr क्या होगा बच्चे? नेगेटिव हो जाएगा। और क्या mr नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन mr इज इक्वल्स टू mc और mc कांट बी नेगेटिव, राइट। mc कांट बी नेगेटिव एंड हेंस mr कांट बी नेगेटिव। देयरफॉर फॉर मोनोपोली elasticity can't be less than 1, right? अगर वो elasticity equals to 1 होती है वो तभी हो पाएगी when there is no cost involved, although again a theoretical case, ऐसा कभी नहीं होता, right? तो elasticity in the case of monopoly हमेशा क्या रहेगी? more than 1, right? एक बार लिख लें इसको। let's start guys। so write down price charged by a monopolist, price charged by monopolist is greater than marginal cost of production, price charged by a monopolist is greater than marginal cost of production and the extent to which price can exceed marginal cost and the extent to which price can exceed marginal cost depends on monopoly power, depends on monopoly power, which is measured by Lerner's index of monopoly power, which is measured by Lerner index of monopoly power, which is nothing but equals to this। उसके बाद देखो, this observation leads to two general conclusions about monopoly pricing, Number one,
Number 1, a monopolist will always operate in elastic region of demand curve. A monopolist will always operate in elastic region of demand curve. A monopolist will always operate in elastic region of demand curve. बच्चे अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, यहाँ पे देखो, दिस इज इलास्टिक रीजन एंड दिस इज इनइलास्टिक रीजन. मैंने आपको इसका मतलब भी समझा दिया कि वाई मोनोपोली विल ऑपरेट इन इलास्टिक रीजन, बिकॉज अगर वो इन इलास्टिक रीजन में ऑपरेट करेगा देन एम आर इज नेगेटिव एंड एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम आर कांट बी नेगेटिव बिकॉज एम सी इज पॉजिटिव, राइट. सो ये डायग्राम बनाना बच्चे इसके बाद, एंड उसके नीचे लिखना व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 एम आर इज इक्वल्स टू 0, व्हेन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 एम आर इज पॉजिटिव, when elasticity is less than 1 MR is negative. Right. After that write down, this is because for profit maximization, this is because at profit maximization MR is equals to MC. MR is equals to MC. Since marginal cost is always positive, since marginal cost is always positive, so marginal revenue must also be positive. So marginal revenue must also be positive, which requires that elasticity is more than 1, which requires that elasticity should be more than 1. और यहाँ पे बच्चे एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, राइट डाउन 1 पॉइंट. When elasticity is equals to 1, when elasticity is equals to 1, ब्रैकेट में लिखना demand curve is rectangular hyperbola, demand curve is rectangular hyperbola. In this case MR is equals to 0, in this case MR is equals to 0, and it will coincide with x axis. ध्यान से देखेंगे इसको, पहले मैं डिमांड कर्व बना रहा हूं बच्चे. दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, राइट, बिकॉज हेयर इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0 एंड मैं एमआर कर्व एक्स एक्सिस पे बना रहा हूँ. दिस इज माई एमआर कर्व, राइट. व्हाई? बिकॉज फॉर अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व elasticity is equals to 1 and at that point MR is equals to 0 throughout, right. In this case firm will produce no output. In this case firm will produce no output as MR is not equals to MC, ब्रैकेट में लिखना where MC is positive and MR is equals to 0. And hence MC is always greater than MR. And hence MC is always greater than MR. And whenever your MC is greater than MR, you will have losses, right? क्योंकि आपको एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने में क्या ज्यादा पड़ रहा है? मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है. So obviously there are no profits. You will always
we face with losses. Yeah. Second लिखो बच्चे, second point. Firm's markup over marginal cost. Firm markup, and what is the markup? Price minus MC is the markup बच्चे. What is the markup? Price minus MC. Firm markup over marginal cost depends on, or depends inversely on elasticity of demand. Depends inversely on elasticity of demand. मैंने आपको उस टाइम फॉर्मूले से दिखाया था, अब एक बार इसको ग्राफिकली भी देखते हैं. एज्यूम करो दिस इज एनी एमसी. यहां पे मैं एक जो डिमांड कर्व ले रहा हूं वो थोड़ा सा स्टीप ले रहा हूं. दिस इज अ डिमांड कर्व. जो एमआर ले रहा हूं वो ऑब्वियसली डिमांड कर्व का स्लोप का ट्वाइस होगा. In this case, this is my MR, this is my demand. Here MR is equals to MC, and this is the price that I will get, right? And this is the MC at this quantity. At this quantity, here we have X, here we have price, cost. This is my X naught. This is my, let's say, P1 and C1. So this distance is telling me the monopoly power. मैं अपना प्राइस MC से कितना ऊपर रख पाता हूं, right? Now before we move forward, I need to tell you one more thing. अगर मेरा डिमांड कर्व स्टीपर है एंड हेंस मेरा एमआर कर्व भी स्टीपर है, राइट? सो अगर एमआर स्टीपर है विच मीन्स दैट एमआर का जो स्लोप है वो ज़्यादा है या डिमांड कर्व का स्लोप है वो ज़्यादा है, राइट? अभी डिमांड कर्व से इसको समझते हैं. अगर मेरा डिमांड कर्व स्टीपर है तो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो ज़्यादा है. Can we say that? And in this case, क्योंकि डिमांड कर्व का स्लोप ज़्यादा है and we know that slope of demand is inversely related to, not directly, inversely related to elasticity. Slope of demand is inversely related to elasticity. किसी भी चीज का स्लोप इनवर्सली रिलेटेड होगा उसकी इलास्टिसिटी के साथ. प्लीज डू रिमेंबर दैट, राइट? व्हाई? व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हियर? वी कैन से dp by dx. What is your elasticity? The formula is dx by dp, p by x. So this is inverse of this, right? तो हमेशा याद रखेंगे कि जो भी स्लोप है वो इनवर्स होगा इलास्टिसिटी के. So in this case, if slope is higher because demand curve is steeper, elasticity will be lower. Can we say that? Elasticity will be lower. Now in this case, since your elasticity is lesser, 1 by elasticity is equals to price minus MC by P. This is the Lerner index. If elasticity goes down, monopoly power increases, right? If elasticity goes down, monopoly power increases. अभी मैं जो दूसरा डायग्राम बनाऊंगा उसमें मैं डिमांड का फ्लैटर लूंगा. देखते हैं कि उसमें प्राइस और एमसी में कितना डिस्टेंस है, राइट? सो लेट्स मेक दैट टू.
ये मैंने MC बनाया and let's say this is my flatter demand curve, this is my flatter MC, sorry MR not MC, this is demand, this is MR, here MR is equals to MC, this is a cost C1 बोलते हैं इसको या C2 बोलते हैं, this is a price इसको P2 बोलते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है वर्सेस वो जो डिस्टेंस है, obviously this distance is higher as compared to this distance and hence we can say that if elasticity or if we have steeper demand curve, elasticity is lesser, 1 by elasticity will increase, which means that monopoly power will increase and hence this distance is increasing as compared to when we have flatter demand curve, which means that slope is lesser, elasticity is more, 1 by elasticity is lesser, which means that monopoly power is lesser, this distance between MC and price will be lesser, right? Okay. Now let's do, अब बच्चे ये पूरी चीज कर चुके हैं, अब एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, राइट? एक बार देखते हैं कि whether we are able to solve the monopoly numerical or not. Let's do that. Write down. Demand curve is x is equals to 50 minus 0.5 p. Your cost is 50 plus 40x. You need to find profit maximization, price, quantity, प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें निकालिए, राइट? अब पहली चीज़ सबसे पहले आप नोटिस क्या करोगे कि आपको जो डिमांड फंक्शन गिवन है वो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन गिवन है, आप इससे कभी भी सॉल्व नहीं करोगे, आप इसको क्या करोगे, यू विल कन्वर्ट दैट इनटू प्राइस एंड हाउ कैन वी डू दैट? 0.5p is equals to 50 minus x. 0.5 को we can write this as 1 by 2. So hence price is equals to 100 minus 2x. This is your price. अब आप इसको TR में कन्वर्ट करोगे और TR लिखोगे rather because profit is equals to TR minus TC. तो TR हम पहले लिख रहे हैं, TR is nothing but price into x. प्राइस क्या है बच्चे? 100 minus 2x into x. This is my TR which is 100x minus 2x square, right? TC हमें given है which is equals to 50 plus 40x. Hence my profit is equals to TR minus TC which is equals to 100x minus 2x square minus 50 minus 40x, sorry 50 plus 40x, open the brackets, 100x minus 2x square minus 50 minus 40x. Now differentiate this with respect to x, differentiate this with respect to x. What you will get? 100, this is our first order condition, bache, remember that, right? 100 x minus 4x minus this is 0 because there is no x, minus 40 is equals to 0 and this is equals to 60 which is equals to 4x and x is equals to 15. बच्चे आपने कुछ नहीं करा, आपने जैसी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिखा आपने mr इक्वल्स टू mc करा, राइट? क्योंकि यहाँ से आता आपके पास mr, यहाँ से आता है mc, यू आर इक्वेटिंग दैट इक्वल्स टू 0, यू आर डूइंग mr इक्वल्स टू mc and your x is equals to 15. Now since your x is equals to 15, you know that the inverse demand function is 100 minus 2x, hence my price is 70 and hence my TR is price into x which is 70 into 15 and my cost is 50 plus 40x which is 50 plus 40 into 15 and hence my profit is equals to, but if you solve this
you will get your profit. This is equals to 1050 and this is equals to 650. So 1050 minus 650 is equals to 400. So profit is equals to 400. एक बार सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी देखते हैं इसकी. अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये आई थी. लेट्स डू द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन. So we know that the first order condition is 100 minus 4x minus 40 and hence second order condition. मैं सिर्फ second order condition इसलिए चेक करूँ कि whether we are maximizing or minimizing, just that. एग्जाम में नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, बट लिखते हो तो एक एज ओवर द अदर्स मिलता है. दैट्स ऑल, राइट. दिस इज 0. फॉर दिस वी हैव -4. For this we have 0, so the answer is -4. Since this is negative, we have maximized the profit. सेकेंड ऑर्डर अगर नेगेटिव है तो हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है, राइट. नाउ बच्चे राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक which is the short run equilibrium. Short run equilibrium. So write down short run equilibrium of monopoly. Short run equilibrium of monopoly. इसको बस ग्राफिकली हम फॉर्मल वे से लिखते हैं क्योंकि अभी तक जो भी हमने चीज़ें करी हैं वहीं से हम इसको देख रहे हैं. सो ग्राफिकली देखते हैं एक बार. सो बच्चे इन दिस केस राइट डाउन एक्स हियर, राइट डाउन price here, right, and cost here. सबसे पहले we need to draw the demand curve, right. Then we need to draw the MR curve. Then we need to draw the MC curve. And where MR is equals to MC, we will get the price here, right. This is the marginal cost, right. अब मुझे एक बात बताओ, आपका TR क्या था? What is your TR? TR था हमारा प्राइस इंटू एक्स. और अगर आप प्राइस इंटू एक्स करते हो, एक्स बच्चे यहाँ है, प्राइस यहाँ है, प्राइस इंटू एक्स ये वाला आ जाएगा आपके पास, राइट. ये वाला एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा वाला. तो दिस इज माई टी आर. अभी के लिए अज्यूम करो कि आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं था. सो इन दिस केस योर TC इज इक्वल्स टू MC इंटू एक्स. MC कितना है? इतना है. इंटू एक्स करोगे तो ये रहा एक्स, ये रहा MC का एक्सेस. तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा बच्चे, जो मैं अभी कलर करूँ, ध्यान से देखेंगे. You will get this area as your cost, total cost, and hence what is your profit? Your profit is equals to this area, जो सिर्फ ऑरेंज दिख रहा है आपको. कई बार इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. Why? Because if TC is there or TFC is there, if TFC is there, this area is nothing but operating profit. क्योंकि अभी हमने यहाँ पे TFC कंसीडर नहीं किया है, हमने सिर्फ TVC कंसीडर किया. मैंने आपको पहले बोला था assuming that TFC is not there, but if TFC is there, this area is known as operating profit. If TFC is not there, this is known as profit or operating profit, बात एक ही है. But if TFC is there, this area is known as operating profit. Operating का मतलब क्या? कि हमारा जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो निकाल के जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमने उसमें से TFC को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है. Does that make sense? लिखते हैं इसको, राइट डाउन
The monopolist maximizes his short run profit if the following two conditions are fulfilled. The monopolist maximizes the short run profits if the following two conditions are fulfilled. If the following two conditions are fulfilled. Condition number 1, MC is equals to MR. MC is equals to MR. And condition number 2, स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR. वही सेम जो हमने पहले किया हुआ है, राइट, फर्स्ट क्लास में मोनोपोली की किया था. स्लोप ऑफ MC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR at the point of intersection. At the point of intersection, the equilibrium of monopolist is defined by point E. Bache, this is point E where MR is equals to MC. The equilibrium of monopolist is defined by point E at which the MC intersect MR curve from below. At which the MC intersect MR curve from below. Thus, both the conditions for equilibrium are fulfilled. Thus, both the conditions of equilibrium are fulfilled. Monopolist realizes excess profit equals to monopolist realizes excess profit equals to the shaded area. The shaded area, यहाँ पे ना आप एक और चीज़ कर सकते हो, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट शो करो तो आपको यहाँ पे AC कर्व भी बनाना पड़ेगा. सो लेट्स मेक वन AC कर्व. दिस इज माय शॉर्ट रन ATC कर्व. अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो x है MR इक्वल्स टू MC यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलेंगे तो MC पे भी AC पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है. सो एट दिस इज नथिंग बट यू कैन कॉल दिस एज E लिख चुके हैं, इसको D लिख लो बच्चे, D. अब देखो, this is the TVC that you have covered because MC into X is nothing but TVC. This part is nothing but TFC, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, ATC into X is your total cost, right? Your total cost is nothing but ATC into X. अगर मैं ATC which is nothing but this into X करता हूं तो I'll get this area. So in this case, this is my total cost. Let me cover it with a different color. Okay. So in this case, my total cost is equals to area 1 and area 2, where area 1 is just showing us the TFC, area 2 is showing us TVC, and if we combine area 1 and 2, we can say that this is equals to TC. Price into X is your total revenue. Total revenue minus area 1 and 2, you will get area 3. So area 1 plus 2 plus 3 is equals to total revenue. Area 1 is equals to TFC. Area 2 is equals to TVC. Hence, area 2 plus 1 is equals to TC. Therefore, profit which is equals to TR minus TC is nothing but we are left with area 3. Right? So now write down. अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे बच्चे, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. सो दिस इज P, D, इसका आप नाम ले लो A, इसका आप नाम ले लो B. राइट? तो हम एरिया 3 की बात कर रहे हैं, राइट?
तो अभी तक आपने लिखा था द शेडेड एरिया DPBA, शेडेड एरिया DPBA,